Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari, and along with Mansi, I'm going to take up episode 2 of Economics Optional Paper 1, where we have been trying to understand with complete honesty and dedication that how we can gradually and organically bring more elements into our answers, and how we can just learn those elements which are very, very difficult actually to grasp. And if once they are grasped, then organically you can do very well in the mains examination. And that is the whole idea. It is not about a mechanical and a kind of you can say a kind of a erratic or a kind of random exercise. It is a very planned process, and that is why it is a non-sensational but a very, very pragmatic, rational and a simple approach. So with some elements in our mind, doing a lot of background exercise, let's start with the questions which we have taken up for the day. For example, the question one says a unique equilibrium sufficient for existence, but existence of equilibrium does not establish uniqueness. So this is again a very a kind of I would say an economic statistical statement which is supposed to be analyzed. So here Mansi will start and we'll move on. Ji sir. So given a basic idea that unique equilibrium will exist when aggregate demand will equal to aggregate supply, that is the general equilibrium condition in the economy. But the condition is that both the curves they have to be convex to the region if the equilibrium is unique, and it has single point of intersection with no affinity to change from that position. So unique equilibrium, I've taken case one. So it is reflected through, I've taken a case study and example through the Keynesian income employment model and drawn the graph at the intersection point is a point of unique equilibrium, which is point E. It is reflecting stability at the same time and is sufficient also, which is determining here the full employment level in the economy. And then existence of equilibrium may not be unique, that is case two. So in this case, again, taking an example that when the supply curve is backward sloping, and mostly it is seen in the case of labor market. So here we are seeing 2 points of intersection and 2 points of equilibrium due to, again, two effects which are working substitution effect herein, which states that as labor wage is increasing, it will be having or it will devote more working hours instead of the leisure hours that it will devote because wage has increased. And at the same time, income effect will be working, which is more empowering over the substitution effect. And in this case, if the real wages is higher, it will shift the labor towards more of leisure hours because we can say a kind of a threshold has been attained, and then labor shift to more of leisure hours. So that is why, because income effect is more stronger here than the substitution effect, so equilibrium is not unique in this case. And I've cited another second example, which is another perfect competition when we're determining equilibrium of a firm. In that case also we see 2 points of intersection of the curve, so that is also not a case of unique equilibrium. So therefore unique equilibrium is sufficient for existence and the reverse is not. Not vice versa. Hmm. Ji. Okay, so moving to the next question. Explain normal profit. Ji. So simple definition that normal profit it's a marker of the achievement of economic profit under perfect competition market structure in the long run. So it is unique in character as there is no tendency of deviation from this position of normal profit. And features of normal profits now. So when the price of market equilibrium that is equal to the marginal cost of the production of the entire industry. So that is how the condition is also depicted graphically, where we see at point E price is equal to marginal cost, marginal revenue, and we can say marginal cost curve is passing through this minimum point of the average cost curve. So all these conditions has to be equal to each other, and we see that at point E there is normal profit. So Hmm. normal profit it will cover the cost of production of the firm and it leaves surplus revenue post factor payments are also made, Hmm. and it prevents entry and exit of the firms in the industry as a result, and which is again absent in case of supernormal profits or when there is loss incurred by the firms. So there are three situations: normal profit, supernormal profit, and loss. And then Okay. lastly, thus normal profit marks the stable functioning of the perfectly competitive industry. So normal profits are important to ensure pro-cyclical investments by firms to expand the capacity of production. Okay. जी हाँ.
Now, Explain the reasons for U shape of long run average cost curve. cost curve. Again, जी sir. again application based question. Direct question. So the shape of average cost curves is decided by the economies of scale of the industry and nature of cost of production, whether it is increasing cost, decreasing cost of an industry. So the simple equation when we're calculating the average total cost is we add the fixed cost and the variable cost, and that is how the three graphs are depicted separately. And the summation of variable cost and the fixed cost will give us this curve of U-shaped average total cost curve, which is asking again the reasons for such U shape. So stage one, I've divided this in two stages. Stage one is this falling stage where it is reaching the minimum point. So here if the industry is facing economies of scale, so the larger scale of production will reduce the marginal cost of production successively. And for example, we see in the SEZ's production as assembly line, like in automobile sector. Then it reaches the minimum point due to, again, the reasons can be skilled labor force, or the modern state of the art technology is also there. Then there's 24/7 electricity, water supply availability. So this will reduce the cost of production. That is why total cost is falling as production is increasing on the x-axis. Now in stage two, it is upward sloping. So here, now the industry will face diseconomies of scale. So that will include, for example, there can be cost push inflation because of tariffs. There can be technology disruption, like there can be cyber attack. There can be administrative reforms like GST realignment can cause certain diseconomies. Then the total cost of production, it increases at the increasing rate. So cost is also increasing, and at every unit produced, it is increasing by a larger amount, which is the law of diminishing returns is operating here in the second stage. So industry produces up to the minimum point of the average total cost curve to maximize the profits. So explain the reasons. It was asking, explain the reasons for the U shape. In the fourth. Next question comes up. They explain the difference between Ricardian and Marxian theory of income distribution. Jason. So the theories of income distribution, they devise the mechanism of income distribution between the different factors of production. Majorly, they take the three factors, which is the land, labor, entrepreneurs, and they are given rent, wages, and profits respectively. So the pattern of this distribution is deciding the nature of growth, that is whether it will be investment driven or consumption driven. Now we have to examine the difference between them. So I have taken this approach. And Ricardian theory mein, it is using Marshall principle and surplus principle. So Marshall gives us a share of rent, surplus is for wages and profit share. It is more broad based and objective in nature, but Marxian theory, it is based on class division, as it is separating into three classes. Proletariat, so they earn subsistence wages. Bourgeois, which is the capitalist class, they have surplus of profits, and landowners, they seek rent from the production. So it becomes subjective as per, again, it is based on the historical experience of USSR. So that is why it becomes little narrow. Now, graphical representation, when it comes to the share of rent here, so it is calculated through total production, which is happening, subtracting the total cost of production. So this gap is here between marginal product and the average product, written in equation form. So this is decided by the gap. Here in the Marxian theory, we see valued. It is valuing the role of labor more, as it has been stated in the labor theory of value, which states labor produces maximum value, but it is ignoring the role of technology modernization. Then thirdly, you can say wages as a share of output which is produced and labor is employed. And here the deviation from the practical life. Informal Due to sector, large informal sector in developing countries. that is not accounted for. And here the rent on the land, it creates inequality as it is obtained from the laborers who are working on the land, and it is extracted from basically the produce that they are creating on the land. So fourthly, profit income is the residual income. It is considered as a residual income which is distributed as the last share, and it is crucial for capital accumulation and which is important for economic growth. Then fourthly, here in Marxian, profit of capitalists lead to reinvestment, but also it widens the income inequality at the same time, which impacts the welfare. So there are two similarities also between them.
wages, they both of them state that wages are to be maintained at subsistence level and Hmm. to ensure subsistence living. Secondly, Hmm. it is determined by the labor employed. Wages are determined by the labor employed and not on the basis of the labor productivity. So this is a deviation from real life again, as labor productivity is fundamental factor which emphasize with these skilling programs like we have PM Kaushal Vikas Yojana. So both the theories, they are unique in themselves, reflecting the Western view, and the Marxian is reflecting the socialist view of Socialist view of income distribution. G. Okay. So, do you have the sample answers also with them? So it's stating equilibrium exists when there is at least There one is at point least where one demand point. Hmm. is equal to supply in the market. This equilibrium is unique, and when there is only one point where demand and supply are equal to each other. So वो ही repeat हो गया है. तो चलिए यही आगे चलिए, बहुत बड़े. single point of intersection, unique equilibrium sufficient for existence. तो उन्होंने normal demand supplies के through explain कर दिया. I've taken the theory, Keynes's theory to explain. So point E, Very demand good. and supply intersect each other. This establishes unique point where market clears, and this unique point is sufficient for existence of equilibrium. Hence, existence of equilibrium also is unique since the market clears at one and only one price quantity combination. को थोड़ा Combination. एक्सपैंड करके वही चीज बोले. हाँ ठीक है. Existence is not unique, so उसमें backward sloping supply curve or labor market. For example, in backward bending supply curve, the equilibrium exists because at least one point, E1 or E2, the market for labor will clear. However, this equilibrium is not unique because market clears at 2 points, or 2 points of equilibrium. Hmm. So Hmm. existence is not establishing uniqueness. Therefore, the shape Uniqueness. of the demand and supply curve in market will determine whether equilibrium exists at a unique point or not. So मैंने सर तो थोड़ा हमने पर हाँ बोलिए. ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करके बोला, एंड फिर मैंने थोड़ा एक और एग्जाम्पल लिख दिया था. तो इन्होंने ठीक है, तो सिर्फ यही यानी कि उसी बोला. चीज को. सिंपली बस यही बोला इन्होंने कि एक पॉइंट है तो यूनिक होगा, दो इक्विलिब्रियम है तो वो यूनिक नहीं है. मतलब हमने उसको और ज्यादा फॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन किया है, हाँ जी. इनकम ये हम कह इफेक्ट, सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इस थ्योरी को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया. चलिए ठीक है, आगे चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये न्यूमेरिकल है. Explain normal profit. So profit refers to the excess of the revenue earned over and above the cost incurred. Normal profit is a characteristic feature of the perfect and monopolistic competition. So normal profit when average revenue equals to average cost. Under perfect competition, it occurs at MR equal to AR होता है. उन्होंने MRMC लिखा है. In the long run, marginal cost is equal to the average cost at equilibrium, where marginal cost comprises of all the costs, जैसे cost of raw material, labor, imputed cost of own labor, imputed cost, ये सब है. इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल. तो नॉर्मल प्रॉफिट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये इन्होंने एक सिंगल फर्म का डिपिक्ट किया, मैंने पूरी इंडस्ट्री का डिपिक्ट किया था. जो लॉन्ग ओके. रन इक्विलिब्रियम है, तो ये शॉर्ट रन फर्म का इक्विलिब्रियम है. सो इक्विलिब्रियम तो आपके एग्जिस्ट. हिसाब से क्या सुटेबल है, क्या करना चाहिए अभी इसको देखने के बाद आपको क्या लगा कि वेयर डू यू फाइंड, मतलब मोर इजी एंड मोर सिंपल एक्सप्लेनेशन के हिसाब से? सर जैसे थ्योरेटिकली भी देखते हो तो इंडस्ट्री का ही लेके एक्सप्लेन किया जाता है. जो सिचुएशन है ना, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो इंडस्ट्री का हम्म. लेके एक्सप्लेन होता है. जो ग्राफ भी है तो जैसे हमने एक्सप्लेन किया है. हाँ, दैट इज मोर एप्रोप्रिएट. चलिए आगे चलिए. सो उन्होंने वही कंडीशन रिपीट किया है. द नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है. दिस मीन्स हम्म. दैट द फर्म इज एबल टू कवर इट्स ओन अकाउंट हम्म. accounted as well as imputed cost while remaining in the business. तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है. सिमिलरली नॉर्मल हम्म. प्रॉफिट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सो ये एक तरीके से परफेक्ट कंपटीशन के लिए भी यही होता है, सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए भी सेम डायग्राम होता है. तो उन्होंने इसलिए हमने बनाया है ये तो. फर्म का लिख दिया. हाँ, इक्विलिब्रियम एट बनाया तो पॉइंट. ऐसे ही, हमने भी तो ऐसे ही बनाया है. सर यही कह रही हूँ मैं, मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम सेम है. तो यहाँ पे चलिए मोनोपोलिस्टिक लिख दिया, ऊपर उसको फर्म का परफेक्ट कंपटीशन वाला करके ड्रॉ कर दिया. ठीक है. चलिए. तो इक्विलिब्रियम ई एम पे वेयर एम आर इक्वल टू एम सी कंडीशन एक्सप्लेन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हैपेंस व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन द एवरेज कॉस्ट, एंड इट्स अ फीचर ऑफ मोनोपोली कंपटीशन एंड ओलिगोपोली अंडर कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी. यही है सर. सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यही बस just- हमने इतने किए. हाँ नहीं नहीं सर, और भी है. एक्सप्लेन द
अच्छा हाँ वही तो। U-shape of long run average cost curve. The usual long run average cost curve shows total cost incurred by a firm in the long run while producing different levels of output. Long run, यही वही फॉर्मूला इक्वेशन लिखी है, एवरेज कॉस्ट, हम्म टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, एंड हम्म, फिक्स्ड कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड बिल्कुल। मशीनरी। तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, बट वो रीजंस पूछ रहा है। लॉन्ग रन हम्म ऑल दी फैक्टर्स आर वेरिएबल्स, there's no distinction between fixed and variable, हम्म ठीक है, उन्होंने एक सिंपल लॉजिक बताया है। हम्म Reasons क्या, long run average cost curve being U-shaped because of increasing and diminishing returns to scale. So initially, हम्म when more and more quantity is produced, adding more variable factors, returns to scale are increasing. Consequently, cost is diminishing. तो marginal cost हम्म decline होती है, वही explain किया इन्होंने। Reason is greater specialization होता है, economies of scale है, better हम्म, efficiency। तो मैंने उसको example के through explain कर दिया, जो इन्होंने यहाँ पे ये points लिखे हुए हैं, जैसे वेरी गुड वेरी गुड। technologies introduce की जाती है वो सब। ठीक है। फिर after point B, which is second phase वाला, where all the above gains have been harnessed, the returns to scale become constant at point B minimum पे। Then later हम्म if production, इसके बाद अगर हम और produce कर रहे हैं after B, तो diminishing हम्म returns हो जाता है, and cost start rising, तो increasing cost हो जाते हैं। जो गेन है उससे ज्यादा कॉस्ट हो जाती है। तो रीजंस, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ओवर क्राउडिंग हो जाता है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो एफिशिएंसी कम हो जाती है उनकी। सो ए हम्म बी इन्होंने लिखा, जो ए बी पोर्शन है इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, कॉस्ट इज फॉलिंग। बी पे हम्म कांस्टेंट रिटर्न है तो मिनिमम पॉइंट, बी सी पे द डिक्रीजिंग हम्म रिटर्न्स, कॉस्ट इज राइजिंग। हम्म So this gives हम्म, rise to U-shape of the long run curve in a competitive equilibrium with technical efficiency. Long run profit maximizing point operates at B, हाँ, क्योंकि वो that is the minimum point where average cost is minimum. So उसी तो तरीके से हमारे एक्सप्लेनेशन में और यहाँ पे जो उन्होंने थोड़ा सिंपल एक्सप्लेन किया है, बस मैं यही कहूंगा। और हाँ, बाकी तो सिंपल भी नहीं कहेंगे। ये थोड़ा रिपीटेटिव हो जाता है, इसलिए आई एक्सप्लेन करेक्ट। थ्रू एग्जाम्पल। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स एंड So examine the difference between Ricardian and the Marxian theory of income distribution. Both Ricardian and स्पेलिंग गलत है, Marshallian, हाँ हाँ, ठीक है। Marxian है, मार्शिलियन Marshallian लिख दी। talks about factor distribution income between the capitalist and labor, but the conclusion arrived was different. So according to Marxian, the share of the labor remains constant at the bare minimum, while according to Ricardian, it keeps rising as bare minimum itself increases चलो with हाँ the ठीक है चलो। रिगार्डिंग थ्योरी उन्होंने एक्सप्लेन किया, assumptions बताया। इनकम इज हम्म डिवाइडेड, वेजेस बेयर मिनिमम है, माल्थुएशन थ्योरी पॉपुलेशन है, प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट इन द सोर्स ऑफ हम्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर थ्योरी दे दी अलग से। हाँ इन्होंने, हाँ ये अप्रोच लेके किया। रेंट फॉर हम्म लैंड इज, वो एक्सप्लेन किया सर फिर थ्योरीज को, उसका हाँ जो बिल्कुल, फीचर हाँ हाँ। जो है मतलब डायरेक्ट। आई थिंक आई लाइक दिस, ये वाला पॉइंट, रिकार्डियन डिस्ट्रीब्यूशन पूरा एकदम बताया कैसे कि, और कंक्लूजन भी दे दिया फिर उसका हाँ बस कि कंक्लूजन कैसे। वाला पॉइंट जो सर हमारे से थोड़ा सा एक पॉइंट डिफरेंट है, वो मेरे को यहाँ से लर्निंग अच्छी लगी। रिगार्डिंग कंक्लूजन, जो एक्सपेंशन हो रहा है हैपेंस, शेयर ऑफ रेंट जो है इंक्रीज होता है, प्रॉफिट जो सरप्लस है उसका शेयर कम होता जाता है एज मोर प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो रिगार्डिंग हमने रिकार्डियन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी कहाँ किया? किया है सर, सेम ही है, सेम अच्छा ही हमने किया किया है, है। ओके। ओके ठीक है। और मार्क्सियन थ्योरी में फिर मार्क्सियन थ्योरी में, हाँ सेपरेटली ठीक लिखा बात है। हाँ गया, बिल्कुल ठीक जो बात है, चलो। डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ हाँ शेयर ऑफ कैपिटलिस्ट, वही जैसे प्लस मैंने बोला, शेयर ऑफ कैपिटलिस्ट कीप ऑन राइजिंग। राइजिंग। तो लेबर, मैंने हाँ ये लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। रिजर्व आर्मी, लेबर थ्योरी ऑफ यहाँ वैल्यू, पे एक दो कीवर्ड्स हैं, की टर्म्स है जो ले सकते हैं, हाँ वो बाकी ले सकते हैं। जैसे लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है, टोटल आउटपुट सी प्लस वी प्लस है, जो ये ये सिंपल है, बट देन एंड देन रेट ऑफ यू नो एक्सप्रोप्रिएशन, एक्सप्रोप्रिएशन हाँ ये लिया जा सकता है। सरप्लस अपॉन बाकी तो ठीक है। कैपिटलिस्ट में मैं आपसे कह रहा था ना, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ वर्क, वर्क। इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ वर्क, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी थ्रू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ये बिल्कुल सच बात है। कॉम्पिटिशन, Difference between Ricardo and Marx was द the शेयर share of capital in the total income, because of which Ricardo, assumed a gloomy, gloomy state as a rate of profit, and its share culminated over time. While Marxian points to, raising share of capitalist in total volume, total income due to completion, which will eventually lead to its own doom हम्म through class struggle. I plus, like the word. जी, तो यही था, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन यही था बस। हाँ जी सर। वंडरफुल, सर वी ये कैन बोला था स्टॉप द। एग्जामिन करना है डिफरेंस, तो इन्होंने एक पॉइंट को इलेबोरेट किया, वही कि प्रॉफिट पहले वाले में कम होता जाएगा, दूसरे वाले में हाँ वो प्रॉफिट तो बात सच है। पूरा कैपिटलिस्ट का।
तो हाँ, मैंने नहीं, कैपिटलिस्ट सिस्टम में कैपिटलिस्ट के लिए प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, लेकिन जो ये जैसे मैं आपको कह रहा था कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जो वर्ड डाल दिया, और हाँ। एक दो जो टैक्स अप्रोप्रिएशन, यानी कि वो थ्योरेटिकल वर्ड की जगह, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये जो पेपर वन की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी हल्की सी मैथमेटिकल भी वर्ड गलत है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच तो है ही, हम्म। थोड़ा इसमें स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। तो बट आई थिंक वी आर, हाउ विल यू कंक्लूड? ओके फाइन। सर जैसे ये डायग्राम जो आप बोल रहे थे, हाँ, ये है हमारे पास, ठीक है, हाँ, हाँ, आई मैंने कैन बस सी। इसको और एक नेक्स्ट स्टेप लिख दिया, जैसे ब्रॉड बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, नहीं, अच्छा किया, ये सब सही है, ये हमें करना ही है, लेकिन आई वाज जस्ट वंडरिंग, इनइक्वल। जैसे वो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू दे दिया, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जो हम बताई, हाँ यार। और जो रेट ऑफ एक्सप्लोरेशन, यानी कोई फार्मूला डाल दिया, हाँ, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जैसे आपने भी डाल दिया। तो हम्म। आई थिंक एवरीथिंग सेम, बल्कि ये तो बहुत डिटेल्ड है, उससे बहुत एडवांस्ड है, बट देन दैट वाज इन 2021, दैट इज आल्सो वी हैव टू सी। तो ये हाँ 2025 है, तो चीजें भी बदली हैं, एग्जाम और सेम क्वेश्चन में थोड़ा अप्रोच भी बदला, तो आई थिंक वी कैन सेफली कंक्लूड दैट we are moving in the right direction, जी। and our vocabulary and our approach is also bringing us what we look forward to. हम्म। So we must keep slogging, that's what I would say. हाँ जी सर। You can conclude by putting your point. सो ये कि एक दो जगह जो मतलब बेसिक फंडामेंटल कीवर्ड्स हैं, वो आई थिंक इस प्रोसेस के थ्रू ही आ जाएंगे। आ जाएंगे, हाँ। बिल्कुल आ बाकी जाएंगे, और इसके सिंपल। लिए। हम्म। हाँ, उन्होंने तो नहीं, और बिल्कुल ही सिंपल सिंपल नहीं, ठीक लिखा है। है। हाँ। हाँ, तो ठीक है, अच्छी बात है, दैट मीन्स वी आर अंडरस्टैंडिंग टू अप्रोचेस, वी आर वर्किंग फॉर टू अप्रोचेस, वन अप्रोच, द हम्म। unique and self-made approach that we are bringing, जी। and the second approach that we already witnessed, which is there in the public domain, हम्म। and we appreciate that approach, and we will try to pick up the best from the both. हाँ जी सर। That is the whole point. जी। With these ideas, we'll move on to conclude the session, so that you can learn, you can enjoy, you can command understanding through rigorous hard work, through clarity of thought, which definitely brings success. That's what we believe, we practice, and we strive for at Ansarkar. Thank you very much.